Welcome back to Director's Cut, where we celebrate the journey of a director. With me, your host Kabir Bedi. हमारे साथ हैं डेविड धवन. डेविड, आपने बहुत सी पिक्चरें बनाई हैं और बहुत सी पिक्चरें हिट भी हो गई हैं, लेकिन आपको अभी तक कोई अवार्ड नहीं मिला. अवार्ड नहीं मिला, बट नॉमिनेशंस बहुत मिले हैं मुझे. न जीतने का कुछ दुख है आपको? दुख नहीं है, बट आप इतनी मेहनत करते हो, द एप्रिसिएशन यू नीड. द अवार्ड इज बेसिकली वही है कि आपके काम की तारीफ वाली बात है. और मनमोहन देसाई जैसे आदमी को भी अवार्ड नहीं मिला कभी. तो बट मुझे क्या लग रहा है, अब दौर जो चल रहा है वो डेविड धवन की कॉमेडी का ही चल रहा है, जो सब बना रहे हैं. अब अवार्ड कैटेगरी में अगर 5 फिल्मों में 4 मुझे लगता रहेंगी कॉमेडीज. आप लगातार कॉमेडीज क्यों बनाते रहे हैं? नहीं, मैंने बीच में बनाई हुई थी, स्वर्ग बनाई थी एक पिक्चर जो बहुत अच्छी भी हुई थी. बट एक कॉमेडी का दौर, लोग बोलते थे जो चल रहा होता है ना, चलती गाड़ी का कभी मतलब वो पार्ट निकालते नहीं है. So that is what my films have started doing so well in entertainment comedy. People have loved me and known me for that. बल्कि ये बोलते मुझे, इस पिक्चर में सर आपकी कॉमेडी थोड़ी कम थी. मतलब I have to really pull my socks to see that. I give them the full 100%. For a man who's involved so much with his family, आपकी फिल्मों में infidelity की बात बहुत होती है. हाँ. ये कैसे? ये शादीशुदा लोगों की फिल्मों में होना भी चाहिए ना. They experience, they watch, they see. But I've only seen. I remember Sajan Chale Sasral is one film. BB number 1, the biggest hit of 91 is on that. So the audience wants to see also. The husband sitting or the wife sitting. You know, they enjoy. It's a very ticklish subject, you know. Naturally. And I've treated him very well, you know. मतलब मियाँ वापस बीवी के पास जाएगा एंड में मेरी पिक्चर में ही है. And your family doesn't ask you कि ये पिक्चरें कुछ Initially so later they did. After 2-3 days तो हर पिक्चर ये क्यों बनाता है यार? सुना है कि आपका बेटा रोहित, वो भी फिल्म मेकर बन रहा है. Yeah, he is a student of the New York University from the Tisch School. He's passed out. अभी ये पिक्चर मैंने पार्टनर जो लास्ट किया है, he has assisted me totally into it. अब वो स्क्रिप्ट लिख रहा है and lot of people after him to do his first film with them and he's getting into the job. I think in a year he'll be my competitor. Right, and you encourage the thought. I have encouraged him totally. I'm with him. You want the new generation to shine the even new brighter. generation is great, you know. And you know one thing best about him, whatever I do, his pinpoints are so correct and he'll touch the right thing. Wrong script, don't touch it, it's not going to work. Or this character, or do a film like that. So many things, you know. Tell me, relationships in the industry, how important are they? See, relationships are fantastic, but it doesn't work here. Hardly it works. You're also from here. It's, you know, everything is momentary here. You're doing well, you're successful, there are people around you here. They are there. All the time they are there for you, you know. But when your films don't do well, that is the time you want to see your relationships are there. गोविंदा का कहना है कि उनका जो बुरा पीरियड था, उसको सुधारने में आपका और सलमान का बहुत बड़ा हाथ था. गोविंदा is like my brother यार. वो मतलब he made a decision, he was not working. तो वो पॉलिटिक्स में जाने के कारण, बट जब वो वापस आया, मेरे पास आया कि डेविड आई वांट टू डू अ फिल्म एंड आई रियली वांट टू गेट बैक टू एंड आई सेड यू हैव टू डिसाइड, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. You say, and you won't believe it, one day I did all this. And Salman was a party to it. I told Salman, ऐसा है ये. तो Salman said, yeah, yaar. And we love him so much. And he's just such a fine actor. I said, we need you. And his relation with me is uncalled for. We don't need, taken for granted it. आपको अजीब नहीं लगता कि लोगों का एटीट्यूड कैसे बदलता है जब आपको सक्सेस मिलती है? I've seen this. You know better also. You can't believe the same people come to you. But you know, I have been always mild and I know this is the trade, this is something that you have to understand. आपकी वैल्यू घटती बढ़ती है. I knew there was a period of mine, when a film of mine, आंधिया, when it didn't do well, तो वो period थोड़ा मेरा बहुत lull period था and I started working on scripts. उसके बाद शोला शबनम आंखें. After आंखें तो whole ball game changed, you know. Right. Then things became better and then film to film. I never had time, back to back. Otherwise in 20 years, I've done 39 films as a director. It's not easy, I think. How fantastic. And if you look into the ratio of the hits, is the maximum number of hits I have given. So you're one of Bollywood's most successful directors. I've given so many hits and very innocently. और ये नहीं कि एक hit देने के बाद then I show attitude or you know, I've kept working, you know. It's only
I've related to work more. You've related to work, related to the industry, and been rewarded for it amply by the public of India and by all the audiences that see the films of Bollywood around the world. On that note, let's listen to the voices of some friends. I think he's one of the best director we have in India. In spite of being such a good director, in spite of having all those qualities which is required for the cinema, he's a very good human being. My experience with him is fabulous. The people around him, they love him. All the producers, all the co-artists, all the technicians, workers, everybody, they all love David. डेविड सर के साथ 2 फिल्में हमारी हो गई हैं, मुझसे शादी करोगी और पार्टनर, जिसका म्यूज़िक माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा रहा है और उनके साथ काम करने से बहुत कुछ सीखने को मिला है. एक बात तो उनकी मैं ये कहूँगा कि ही डजंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी. टू मैच विथ हिज एक्साइटमेंट इट्स अ टफ टास्क कि उनको जो चाहिए वो चाहिए और ही विल नॉट कॉम्प्रोमाइज एट ऑल. जब उनकी पहली फिल्म एज डायरेक्टर उनको मिली बॉबी राज की, फिल्म का नाम था ताकतवर. उनकी डेब्यू फिल्म जो थी उसमें भी मैं था और उसके बाद मेरे हिसाब से मैंने 15-16 फिल्में डेविड धवन के साथ की हैं. ही इज़ अमेजिंग डायरेक्टर, ही हैज़ अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज कंपेयर हिम विद मनमोहन देसाई. यही मैसेज दूंगा कि जिस तरह आपने ये 38-39 फिल्म बनाई है, मैं चाहता हूँ आप और 100-200 फिल्म बनाएं. David, everyone wants to rock with you for the next 100 films. How does that sound? Sounds very great, but I know how is it making 39 films. बहुत मेहनत करनी पड़ती है. 39 फिल्म्स करने के बाद क्या होता है कि व्हेन यू राइटिंग अ स्क्रिप्ट आल्सो, तो कोई सीन में बैठे रहे, अरे ये तो मैंने वो पिक्चर में किया था, अच्छा ये भी किया हुआ है यार, कुछ नया कुछ लेके आओ. वेरी डिफिकल्ट इट इज. What's your fascination with double roles? I just took it and I've enjoyed it. I've done the maximum double roles, I think. Bol Raha Bol, Rishi Kapoor, then Judwa, Salman. Then I've played single person playing double roles. That is Govinda in Kuli #1. He's played a double role, but he's single. Bade Miyan, Chota Miyan, 2 Amit ji, 2 Govinda. You know, the crisscrossing. You know, the humor becomes much more on screen if you watch it. It lends itself more to situational comedy. Yeah. Because the misunderstanding. Misunderstanding, though, an बहुत ही audience हो loves misunderstanding. They start laughing. They know अभी क्या होने वाला है. And when the audience knows क्या होने वाला है, उनको बहुत मजा आता है. We are talking to David Dhawan. Please be back for more on Director's Cut.